There the man with soul so dead, who never to himself hath said. Hath is an old English word, ये old usage है इसका, तो modern English में ये has है. आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का यूनिट 2 देखेंगे जिसका टाइटल है पैट्रियटिज्म, और आज के टॉपिक में हम डिफिकल्ट वर्ड्स विद कंटेक्चुअल मीनिंग्स को देखेंगे. मूव करते हैं हम फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ. पैट्रियटिज्म. पैट्रियटिज्म मीन्स लव ऑफ वंस कंट्री एंड द डिजायर टू डिफेंड इट. मीन्स लव फॉर द मदरलैंड. मदरलैंड मीन्स होमलैंड या फिर नेटिव लैंड. और डिवोशन. डिवोशन मीन्स लॉयल्टी टू वंस कंट्री. अब पैट्रियट, आप इसको पैट्रियट पढ़ें या पेट्रियट पढ़ें, दोनों ठीक हैं. loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. willing का मतलब होगा ready या inclined, और arises का मतलब होगा happens या फिर starts to exist. The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. Countryman means compatriot या फिर person from one's country. It is considered a commendable quality. Commendable means praiseworthy या फिर exemplary. Paragraph number 2. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard. Safeguard means protect the interest of the country and nation. For a patriot, the sovereignty, integrity. Sovereignty means authority or domination. Integrity means uprightness या फिर honor. And honor. Honor means reputation. तो integrity का मतलब यहाँ uprightness कर लें, और ऑनर का मतलब रेपुटेशन या फिर डिग्निटी, कोई भी आप यूज कर लें. ऑफ द कंट्री आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज. सुप्रीम मीन्स प्रिंसिपल, हाईएस्ट, ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज मीन्स अग्रीमेंट या फिर डील कैन बी मेड. पैट्रियट्स रेंडर. रेंडर मीन्स कंट्रीब्यूट. सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन या फिर सेफ्टी. तो प्रिजर्वेशन का मतलब यहां प्रोटेक्शन कर लें. एंड प्रिजर्वेशन का मतलब प्रोटेक्शन या सेफ्टी कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां आप सेफ्टी कर लें क्योंकि आगे प्रोटेक्शन यूज हुआ है, तो प्रिजर्वेशन का मतलब यहां सेफ्टी कर लें. एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. कायद मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट. ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. He gave the Muslims a sense. Sense means awareness of identity by securing. Securing means acquiring a separate homeland for them. Homeland means the country where a person was born. He said, we must develop a sense of patriotism which galvanizes. Galvanizes means inspires या फिर stimulates us all into one united and strong nation. Next paragraph हम देखते हैं. The spirit means sense या फिर feeling of patriotism makes us stay alert. Alert means attentive या फिर vigilant in the wake of foreign invasion. Invasion means attack या फिर intrusion. In the history of Pakistan, there are many instances. Instances means cases या फिर examples when people laid their lives for the defense of the country. In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. Captain Muhammad Sarwar, Major Tufail Muhammad, Major Aziz Bhatti, Pilot Officer Rashid Minhas, Major Muhammad Akram, Major Shabir Sharif, Sawar Muhammad Hussain, Lance Naik Muhammad Mahfuz, Captain Colonel Sher Khan and Havaldar Lalak Jan all embraced. Embraced means accepted या फिर took up martyrdom. Martyrdom means shahadat. Death of a martyr means shaheed ki maut. While fighting bravely for their for their motherland, all of them were awarded Nishan-e-Haider, the highest military award given to great patriots who lay down. Lay down means to die for something, their lives for the country. Next paragraph देखते हैं. Patriotism, therefore, is not just a feeling, it is a live spirit that continuously inspires and guides a nation. In the words of S.W. Scott, a man devoid means lacking या फिर empty of patriotic spirit is like the one who
breathes. Breathe means there, sorry, takes air in and let out, सांस लेना. There the man with soul so dead, who never to himself hath said. Hath is an old English word, ये old usage है इसका. तो modern English में ये has है. Hath is an old English word. This is my own, my native land. So native means domestic या फिर inherited. तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर. उम्मीद है कि आज के लेक्चर को सुनने के बाद आपको जो वर्ड्स हैं उनके कंटेक्चुअल मीनिंग समझ आ गए होंगे. लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर इस स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर.